Hi guys, welcome to percentage 3. So we till now we have already covered and you're very well versed with what percentage to fraction values are, what multiplication factors are both for fractions and decimals, and apart from that you have already learned how to calculate a percentage increase or a percentage decrease in any value, right? Now what we'll be doing in this video, what we'll be covering is that if let's say a number has been increased from x to y and a certain percentage ka increase is there, by what value should we multiply it again, or by what percentage should it be reduced to bring it back to the original value? That is something that we'll be covering in this video, right? So what do we have? So let's say that from 100 my number has gone to 120, correct? So from 100 my value has gone to 120. That's a 20% increment we are seeing, or the increment that we are seeing is 1 by 5. Correct? The increment that we are seeing is equal to 1 by 5. Right? Now to bring it back, the solution is, let's say this part, this is numerator, this is denominator. Right? So numerator by denominator ka increment has been there. So to bring it back to the original value, the percentage decrease, right? The percentage decrease that is required is n divided by n plus t. So in very simple terms, if the increase has been of 1 by 5, the decrease has to be there of 1 by 6. A very simple approach, right? If the increase has been of 1 by 5, the decrease has to be of 1 by 6, right? Acha, यहाँ पे increase of 1 by 5 represents a 20% का increase, a decrease of 1 by 6 represents a 16.66% का decrease, right? That's it. That is how you calculate. Let's take some other value. Let's say we have 600. Now from 600, the value has gone to 700. So what is the increment? The increment is of 1 by 6, right? The increment is of 1 by 6. So that to bring it back to the original value, the number has to be decreased by what amount of times? By 1 by 7. Because numerator was 1, denominator was 6. So numerator 1, denominator mein n plus numerator plus denominator, that is 1 by 7. So it has to be reduced or slashed by 1 by 7. Correct? So this simply means what? By the increment has been of 16.66% and the decrease has been done for 14.28%. Right? Now, इसी में if you want to calculate कि भाई multiplying factor से होता, तो direct किस number से you will be multiplying? तो भाई for increment of 1 by 6, what you will be multiplying with is you will be multiplying with 7 by 6, and for a decrease of 1 by 7, you will be multiplying with 6 by 7. Right? So in terms of multiplying factor कि भाई किस number से multiply करके we have arrived at that number, वो निकल गया मेरा 7 by 6, उसी का reverse हो जाएगा कि to bring it back, उसी के reverse से you will multiply and you will arrive at your original value. Right? नहीं समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है, दोबारा एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So let's say we are going from 120 to 150. So 120 to 150 is how much increment? It's an increment of 30 points over 120. Right? It's an increment of 30 points over 120. That simply means it's an increment of 1 by 4. Increment of 1 by 4 simply means a 25%. So from going from here to here, we are going up by 1 by 4. So from coming here from 150 to 120, we'll be coming down by what value? 1 by 5. If you want to dictate it in terms of multiplying factor, so 120 multiplied by 5 by 4 will give you 150, and 150 multiplied by 4 by 5 will give you a 120, right? So whatever is the percentage value with which you are increasing, right? The numerator by numerator plus denominator will give you the percentage value by which it has to be reduced to arrive at the original number. A multiplying factor, क्योंकि भाई यहाँ पे आप reduction कर रहे हो, तो multiplying factor will be 1 minus fraction. And यहाँ पे addition कर रहे हो, that is increment कर रहे हो, तो multiplying factor will be 1 plus fraction, right? So I hope I am making myself clear over here. Okay, then you have three different formulas for similar concept. All three formulas are same, applied in different concepts, right? Questions को different concepts की तरह पूछा जाता है. So I am going to write all those three of them. Okay, and we'll be solving 1 or 2 questions on each of them so that you get a better understanding of it. All right? समझने की कोशिश करते हैं कि let's say if the value of an item goes up by X%, right? Goes up by X%. The percentage reduction
to be done to bring it back to the original value is 100x 100 plus x percent. So this many percent, right? So if the value of an item goes up by x percent, the percentage reduction to be done, required to be done to bring it back to the original value is 100x divided by 100 plus x percent. राइट वही सेम चीज जो पहले करी, सेम चीज है, करनी वही चीज हो रही है. जैसे पहले 100 से 120 गए थे, राइट, 20% का इंक्रीमेंट था, तो 20% इज माई एक्स परसेंट. तो वो क्या बोल रहा है, 120 से 100 जाने के लिए मेरे को कितना परसेंटेज का रिडक्शन चाहिए, 100x, दैट इज 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, राइट. So this is 2000 divided by 120. 2000 divided by 120 gives you what? 200 divided by 12, that is 100 divided by 6, that is 16.66%. And you see this was the value that we were looking at over here, 16.66%. तो चीज वही है, अलग अलग तरीके हैं समझने के लिए. वट एवर यू फील, आई एम टेलिंग यू ऑल द वे सो दैट वट एवर वे यू फील कंफर्टेबल विद, आप उससे आगे बढ़ो, राइट. आप अगर इसको इस तरीके से, लाइक इफ यू वांट टू डू इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, कि जिस फ्रैक्शन पे बढ़ाया n डिवाइडेड बाय n प्लस डी से आप उसको नीचे करोगे, लाइक रिड्यूस करोगे, यू कैन गो एट विद दैट फ्रैक्शन का परसेंटेज कन्वर्जन ऑल्सो, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद एज ऑफ नाउ, राइट. दूसरा, अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाना चाहो, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन अप्लाई, राइट. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन इजिली अप्लाई, करेक्ट. सिमिलरली इसी में लेट्स से इफ इट वाज सेड कि इफ वैल्यू ऑफ एन आइटम, आई विल राइट इट सेपरेटली. सो अभी हमने क्या पढ़ा, इफ वैल्यू ऑफ आइटम गोज अप बाय x परसेंट, देन परसेंटेज रिडक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू यहां पे मेरी कम है, तो उसके लिए 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x हम कर रहे हैं, राइट. बट व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम गोज डाउन बाय x परसेंट, राइट. इफ द वैल्यू ऑफ आइटम goes down by x percent, right, then we will have to bring it up to bring it back to the original value, क्योंकि original value इस बार बड़ी हो रही है, right. तो to bring it back to the original value, the percentage increment required, the percentage increase required is 100x divided by 100 minus x percent, right. For example, let's try and understand. मान लेते मेरी इनिशियल वैल्यू 150 थी, वहां से मैं चला गया 120. So I'm looking at a decrease of what percentage? 30 points over 150. That means I'm looking at a decrease of 1 by 5, or I'm looking at a decrease of 20%. Right? I'm looking at a decrease of 20%. Correct? Okay. So this 20% का decrease would be x. तो 120 से 150 जाने के लिए how much increment is required? 100 into 20 divided by 100 minus 20, that is 80. That is 2000 divided by 80. That simply turns out to be equal to 25%. और अगर फ्रैक्शन टर्म्स में सीखना है तो 150 से 120 जाने के लिए what is the reduction that we have done? The reduction that we have done is of 1 by 5, right? तो वापस आने के लिए this is numerator, this is denominator. तो वापस आने के लिए it would be n divided by d minus n. तो जब इंक्रीमेंट हो रहा था और वापस आना था जो है छोटी वैल्यू पे, तो n डिवाइडेड बाय n प्लस डी हो रहा था. जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे गए हैं, दैट इज डिक्रीज किया है, और वापसी में इंक्रीज करना है, तो इट विल बी n डिवाइडेड बाय d माइनस n. दैट सिंपली वुड मीन ओवर हियर 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, दैट इज 4, 25%, which we have also calculated with the help of my formula, right? With the help of formula also we have calculated the same thing, right? So I hope I am making myself clear. ठीक है. नाउ ओके, सो ये तो हो गया कि अगर वैल्यू को मैंने ऊपर ले गया x परसेंट, वापस ले आना है ओरिजिनल पे, तो 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x. एंड अगर मैंने वैल्यू को x परसेंट नीचे ले गया और वापस लेके आना ओरिजिनल वैल्यू पे, तो अगर डिक्रीज किया है तो फॉर्मूला हो जाएगा 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x परसेंट.
दैट इज इस केस में 120 में 25% का इंक्रीमेंट करके वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 150। यहाँ पे 120 में 16.66% का डिक्रीज करके वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 100। और अगर आप फ्रैक्शन के टर्म में सीखना चाहते हो तो अगर इंक्रीमेंट है तो एन डिवाइडेड, तो डिक्रीज कितना करना होगा, एन डिवाइडेड बाय एन प्लस डी। और अगर डिक्रीज करा है तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, एन डिवाइडेड बाय डी माइनस एन विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, on the similar line, there are two more values, two more things that you have to do, right? So, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, बस तरीके अलग होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो वी विल बी कवरिंग इन एग्जैक्टली दोज वर्डिंग वाला फॉर्मेट, राइट, बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव एनीथिंग अनटच्ड इन आवर कोर्स, राइट। तो अपने पास क्या है कि लेट्स से इफ ए इज x% मोर और लेस than b, if a is x% more or less than b, then b is 100x divided by 100 plus minus x percent less oblique more than a, राइट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि अगर a की वैल्यू x% ज्यादा है b से तो ऑब्वियसली b की वैल्यू जो है लेस होगी। कितना लेस होगी, दिस इज द वैल्यू 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x%। एंड अगर a की वैल्यू इज लेस देन b इनिशियली तो b की वैल्यू ऑब्वियसली a से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस x। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लेट्स से माई a इज इक्वल टू 200 एंड a इज लेट्स से 33% मोर, 33.33% more than b, more than b, so a is 33.33% more than b, करेक्ट। तो पहले तो अगर आप निकालना चाहो कि मेरा b है क्या, पहले ये भी एक चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं कि b क्या होगा। तो हमको पता है ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल गिव मी द फाइनल वैल्यू, राइट। So let's say my original value is b and a is 33.33% more. तो b में when we will multiply with 33.33%, that is when we will be multiplying with multiplying factor क्या हो जाएगा 33.33 के लिए, अगर increase कर रहे हैं ज्यादा है तो it will be 4/3, 1 plus fraction, right, is equal to final value of 200. तो my b will become equal to 150. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a is 200 and it is 33.33% more than b, how much is b less than a, राइट। तो b लेस देन ए कितना हो जाएगा भाई, एक तो अपने पास से कैलकुलेट कर लेते हैं कि b इज 50 लेस देन ए एंड 50 ओवर 200 लेस देन ए, तो 1/4 b इज नथिंग बट 25% लेस देन ए। बट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a इज 33.33, 100 बिकॉज a इज मोर तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, b इज लेस प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 133.33। सॉल्व दिस वैल्यू, 3333 divided by 133.33, right, solve it and you will find कि भाई मेरा क्या हो रहा है, this is equal to getting equal to 25%, right, it's still equal to 25%, right। तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, 3333 डिवाइडेड बाय 133.33 you will get it as 25%. So if a is x% more than b, then b is 100x divided by 100 plus x% less than a, and if a is x% less than b, then b is 100x divided by 100 minus x% more than a, right। और अगर आप इस सम टर्म्स में करना चाहो तो you can always do that, feel free to do that, right। So I hope I'm making myself clear. एक और पॉइंट कर लेते हैं, एक और पॉइंट एकदम सेम लाइंस पे है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम, if the price of an item goes up by x%, right, the quantity consumed should be reduced by same formula, same reduced by 100x divided by 100 plus x percentage, right। And similarly you have that if the price of an item goes down by x%,
the quantity consumed should be increased by 100x divided by 100 minus x percent. Right? It should be increased by 100x divided by 100 minus x percent. Obviously, the case is that my total expenses remain the same. For my expenses to remain same. तो दोनों ही केसेस में फॉर माई टू कीप माई एक्सपेंसेस सेम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए बाय 20%, तो दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी कुछ रिड्यूस करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू हैव द सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिमिलर एक्सपेंसेस। तो किस वैल्यू से आप अपनी पेट्रोल की क्वांटिटी को रिड्यूस करोगे? 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x%, राइट? एंड सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल लेट्स से गोज डाउन बाय 20%, तो किस क्वांटिटी से आप अपनी क्वांटिटी को कितना इंक्रीज करोगे दैट योर एक्सपेंसेस रिमेन द सेम? It will again be 100x divided by 100 minus x percent. So it will still remain the same, right? So this is how it works, right? एक question भी करके देख लेते हैं if you want, कि let's say my petrol prices have gone up by 20%, right? Petrol has gone up by 20%, right? So to keep the expenses as same, my consumption would reduce by 100 multiplied by 20 divided by 120, because 100x divided by 100 plus x. So this would simply mean 2000 divided by 120, that is 16.66%. So my consumption should reduce by this value so that my expenses remain the same. Correct? My expenses remain the same. तो तीनों चीजें सेम ही है, सेम फॉर्मूला है, याद कर लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली एनमैट स्नैप जैसे एग्जाम्स में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। विद इन अ मिनट यू कैन आंसर, बिकॉज नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, कैलकुलेशन परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन आ गया, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको सारे परसेंटेज जो मेजर्स हैं, मेजर वंस हैं, वो आपको याद हो चुके होंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अंडर 30 सेकेंड्स, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? राइट, परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज आपको बोलूंगा, अरिथमेटिक में, एंटायर अरिथमेटिक, राइट, एंटायर अरिथमेटिक, वन थिंग दैट यू कैन डू, इफ द क्वेश्चन doesn't have any absolute value, and everything is talked about in percentage or ratios, you can calculate everything considering your initial value as 100, value as 100, 100x, x, or any other value that you want, or any other value that you want. But the condition is that there should be absolutely no absolute value used in the question, right? अगर क्वेश्चन में कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं यूज्ड है और सारी चीजें केवल जो है विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो है परसेंटेज, रेशियोज और इसके बेसिस पे केवल दी हुई है, यू कैन अज्यूम योर बेस वैल्यू टू बी 100x, 100x, करोड़, 10 करोड़, वट एवर यू फील लाइक, राइट? इस बात को एक खास ध्यान रखना। When we'll be solving questions, I'll also be helping you understand कि मैं इस बात से क्या मेरा मतलब था। I'll be helping you understand with that, बस इस बात को जो है अपने दिमाग में कि अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान में रखो। व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस आई विल बी हेल्पिंग यू रिमेंबर दैट, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई हम ये क्यों बोल रहे हैं, राइट? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ऑल दीज 3 formulas that we were talking about are clear। और परसेंटेज इंक्रीज से दोबारा वापस ले आने के लिए अगर फ्रैक्शनल टर्म्स में if you have to calculate, so I hope that is clear to you as well।
right? So if done, I'll see you guys in the next video.